welcome back to my class Learning with Juhi Goel. This video is in continuation with the previous video, that is chapter 9 Programming Constructs, and in this we will study about conditional or selection statements in Java, and link of the first video, first part of this chapter I provided in the description box. So let's start. In previous video we studied about programming constructs. There were three types: sequence, selection and looping or iteration. So in this we will start with conditional or selection statements. So basically conditional or selection statements are used to make decision in the program. जब you need to make any decision on some condition, on any specific condition, if you want to make any decision कि हाँ if this condition is true तो ये execute हो, इस condition true तो वो execute हो. Okay, so conditional selection statements are basically used to make decision in the program. Let us see. These are the two pictures. Here you can see. So I have to write a program कि if number of people इतने हो तो ऐसे, number of people इतने हो तो ऐसे. So make a pause of the video and spot the differences. So here you saw that number of persons अगर less than 5 है, if number of persons are less than 5 तो we'll do party at home. If number of persons are more than 5 then we will do party at hotel. So हमने condition यहाँ पे क्या लगाई, number of persons पे, कि number of persons more than 5 है और less than 5 है, उसके according we will do party. Okay, तो जनरल हो गया. So इसीलिए अगर हम इसको प्रोग्रामिंग में करना है, इस पोर्शन को कन्वर्ट, तो we will use conditional or selection statements. Let us go in deep. So they are used to make decision in the program, used to control the flow of the program in Java. Obviously आपको अगर condition true है तो ये वाला statements execute हो, false है तो ये statements execute हो. So basically used to control the flow of the program, allow us to control the flow of the program, or you can say allow us to choose what set of instructions to be executed according to the condition. Okay, these are the four statements जिनका मीनिंग बिल्कुल सेम है. Okay, basically decision या control the flow of the program, और या set choose करने के लिए what set of instructions that need to be executed. Alright, so with this flow chart I will explain this. If condition, this is a condition, okay, condition could be true or condition could be false. If this condition is false तो ये set of statements execute हो जाए, okay, और फिर rest of the program continue करे. If this condition is true तो ये set of statements execute हो जाए और rest of the program execute करे. See, अगर if condition true है तो ये वाला block execute नहीं होगा. So that's what I told you. It selects basically what set of instructions to be execute. कि false है तो ये execute होंगी और ये वाली execute नहीं होंगी. If this condition is true then these statements will get executed and these statements will not get executed. Okay. So here we will see that selection of conditional statements in Java, there are basically of two types. First is if, second is switch. So in if, again there are three types: if else or nested ifs, that we will study in detail, and then we will study switch statements. Okay, basically if statement जो है वो हमने क्या देखा, if statement tests a particular condition. Okay, first I will write one syntax, then with an example I will explain this. Okay, so इसका syntax कैसा होगा? If expressions हमने पढ़े थे chapter number 5 में. If expression अगर true है then this statement will get execute. Okay, अगर ये expression false होता है तो ये statement execute नहीं होगी. Okay, ये अपना rest of the program जो भी होगा इसके नीचे वो execute करेगा. One more thing, अगर आप यहाँ पे वो नहीं लगाते ओपन एंड कर्ली ब्रेसेस इफ के बाद यहाँ पे तो ये जो भी इसके जस्ट नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी वो ही एग्जीक्यूट होगी. ओके, इसके जस्ट नेक्स्ट स्टेटमेंट ही एग्जीक्यूट होती है. एग्जाम्पल, इफ a इज ग्रेटर देन 15 तो प्रिंट कर दे a इज नंबर ग्रेटर देन 15.
या तो हम यूजर से इनपुट करा सकते हैं या फिर हम यहीं पे खुद ही डिक्लेयर कर सकते हैं कि इंट a is equals to, suppose I have declared this variable a of integer type and initialize it with 14. So what will happen? Is it true 14 is greater than 15? No, this is false. तो ये तो expression false हो गया. This expression got false. तो ये वाली जो statement है ये execute नहीं होगी. Okay? This statement won't get execute. If suppose this is 16 is greater than 15, yes, so this statement will get execute. One more thing, अगर मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, if a is equals to 15, what is happening? अगर जो a है यहाँ पे ये 15 में डिक्लेयर करती हूँ, is it 15 is greater than 15? No, 15 is not greater than 15. Again this expression will get false and this statement will not get execute. Okay? Alright. Next, if expression, then statement. Another example, if ch is equals to blank, ठीक है? ch मैंने कोई कैरेक्टर ले रखा है, char ch, ठीक है? System out dot it is a space character. अगर ये क्या है, हमने double equals to, we read it right, we understood this in chapter number 5, operators and expressions. तो इसमें क्या हुआ, अगर ch is equals to space है, ये हमने एक सिंगल कोट्स में कैरेक्टर को डिक्लेयर करते हैं तो इट इज अ स्पेस कैरेक्टर. अगर ये नहीं होगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी. ओके, हम यहाँ पे पहले डिक्लेयर करेंगे या फिर आप यूजर से भी इनपुट करा सकते हैं स्कैनर क्लास की हेल्प से. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ए डिक्लेयर किया. इफ आई हैव डिक्लेयर्ड ए तो ये वाली स्टेटमेंट क्या, ये एक्सप्रेशन क्या ट्रू है या फॉल्स है? एक्सप्रेशन विल गेट फॉल्स, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी. इफ आई हैव डिक्लेयर्ड दिस ch लाइक दिस ओनली इन सिंगल कोट्स, so this statement is true, this expression is true, then this statement will get execute. Okay, next, if expression statement, example char ch, if ch is greater than equals to 0 and then greater ch is less than equals to 9, तो क्या होगा, system dot out dot println कर दे, it is a digit. You all know right, this syntax is used to print the output, to show the output, and if you will, whatever you will write in double quotes, it will come as digit. I have created one video on this system dot out dot println. You can check it out in the playlist, or you can search it on Java, learning with Juhi Goel in the YouTube. So here you can see, अगर मैं यहाँ पे ch को डिक्लेयर करती हूँ, ch is equals to 8. Okay, so this statement get true and this output will get print. It is a digit. Okay, all right. अगर जैसे लास्ट हमने किया कि हमने इसको null ऐसे empty डिक्लेयर कर दिया तो this expression will get false, तो ये स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट नहीं होगी. Okay, so in previous slides you saw that the general syntax we saw allows us only a single statement in the if part. So if we want to execute multiple statements, if we want our program to execute multiple statements in if part, so we will write these statements in blocks, sorry, in curly braces. Okay, these are the curly braces. So if we want multiple statements to be executed, you will write them in the curly braces. तो ये वाला जो ब्लॉक होगा, ये पूरा ब्लॉक इस if expression का होगा. Okay, one second. Okay, so let's see example. Int money is equals to 45 and saving. Here you can see that I have created two variables, one of integer type, one is money and another is saving, and I have initialized this variable equals to 45. Then all lines will come. If money is greater than 45 and money is less than 100 means ये आपका डबल एंड है, तो मतलब ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी एग्जीक्यूट करेगा आगे वाला. सो सेविंग, मैंने सेविंग में क्या किया, सेविंग इज इक्वल से 200 माइनस मनी.
एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सेविंग अमाउंट इज प्लस सेविंग. तो सेविंग अमाउंट इज आउटपुट कैसे लिखेगा? सेविंग अमाउंट इज सेविंग. सेविंग हमारा कहाँ से कैलकुलेट होगा? यहाँ से 200 माइनस मनी. सो लेट्स सी, मनी इज इक्वल्स टू 45. ओके, इज मनी 45 से बड़ा है मनी? नो, मनी 45 के इक्वल है. तो जब यही फॉल्स हो गया तो आगे तो जाएगा ही नहीं ये. तो क्या हो गया? ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई. फॉल्स होगी तो ये स्टेटमेंट्स आपकी एग्जीक्यूट ही नहीं होंगी. ये ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट नहीं होंगी. इफ मनी इज इक्वल्स टू 46 इज ग्रेटर देन 45, यस. एंड मनी इज लेस देन 100, यस. 46 इज लेस देन 100. तो फिर आपका ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी. क्या करेगा? उस सेविंग में से, सेविंग क्या होगा? सेविंग इज इक्वल टू 200 माइनस मनी. मनी इज 46, 200 माइनस 46 और आउटपुट आपका क्या आएगा? सेविंग अमाउंट इज वॉट एवर वैल्यू विल कम हियर, इट विल गेट प्रिंटेड हियर. ओके, अगर हमने यहाँ पे ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट ये नहीं लगा रखा होता, कर्ली ब्रेसेस हमने नहीं लगा रखे होते, तो व्हाट वुड हैव हैपेंड कि आपका ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये सेविंग इज इक्वल्स टू दिस, ये तो एग्जीक्यूट होता है इसके ऊपर, इस डिपेंड करता है इस वाले एक्सप्रेशन पे. बट दिस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ये हमेशा एग्जीक्यूट होगा. ओके, अगर आपने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाए होंगे. बट मैं क्या चाहती थी, व्हाट आई वांट इज कि इफ ब्लॉक, अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू होता है तभी ये दोनों स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हुए, नहीं तो नहीं हुए. सो आई पुट देम इन अ कर्ली ब्रेसेस. ऑलराइट, सो नाउ वी विल स्टडी इफ एल्स. दिस इज इफ एल्स पार्ट. अभी तक हमने व्हाट वी स्टडीड इज इफ पार्ट ओनली. नाउ वी विल स्टडी अबाउट इफ एल्स. दैट मीन्स कि इफ वो कंडीशन ट्रू है तो ये हो जाए, एल्स अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो भी आई वांट कि सम पार्ट ऑफ स्टेटमेंट्स टू बी एग्जीक्यूट. ओके, सो लेट्स सी. once if you have not liked, if you like the video, please like the button and subscribe the channel, and there is one bell icon next to the subscribe button. Please click on that so that you will get the early notification as soon as the video is uploaded. Okay, let's start. If money is less than 100, अगर हमारे पास मनी लेस देन 100 है, देन बाय चॉकलेट्स एंड प्रिंट अ मैसेज लवली चॉकलेट्स. एल्स अगर मनी हमारे पास ग्रेटर देन 100 है और इक्वल्स टू 100 है, देन वी विल बाय स्वीट्स एंड प्रिंट द मैसेज यम्मी स्वीट्स. सो दिस इज द सिनेरियो यू कैन सी. ये डिपेंड करता है मनी के ऊपर. अगर मैं इफ पार्ट लिखती, इफ आई वुड हैव रिटन ओनली इफ पार्ट, तो यही पोर्शन एग्जीक्यूट होता. बट आई वॉन्ट कि इफ मनी इज ग्रेटर देन 100 और इक्वल्स टू 100, देन दिस पार्ट विल गेट एग्जीक्यूटेड. यू हैव टू बाय. सो लेट्स सी. तो इसका सिंटेक्स क्या होगा? इफ एक्सप्रेशन इज ट्रू. ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? इफ एक्सप्रेशन इज ट्रू तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए, एल्स ये वाला ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए. तो बेसिकली क्या है? इफ दिस एक्सप्रेशन comes out to be true, so this part will execute, this block of statements will get execute. Otherwise अगर expression false होता है तो this part of statement will get execute. Obviously हर condition पे या तो true होगा या false होगा. Okay, so now let's see how we will program that money वाला program, money वाली condition. If money, हमने क्या किया? What we did is money को, sorry, this money we have created one variable of type integer, of integer type, and declared it equals to 300. We have initialized this variable with the value 300 and string by, हमने एक string, हमने एक by type का variable बनाया of integer type, sorry, of string type, sorry, we have created one variable of string type. Okay, next we have put this expression if money is less than 100, so buy is equals to chocolates. This is of string type, so we have put it in a double quotes. Here you can see, and print कर this. क्या print करवाना था हमें? मैसेज लवली चॉकलेट्स. else पार्ट आएगा क्योंकि अगर मनी इज इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 100 तो इसकी सेकंड कंडीशन तो यही बनती है. अगर मनी 100 से छोटा है तो ये एग्जीक्यूट होए, नहीं तो एल्स बाय स्वीट्स और प्रिंट करा द स्टेटमेंट लवली स्वीट्स. ऑलराइट,
This is if else part. Got it? So next video we will do programs on if else statements. So till then, keep watching. If you like my video, please like and subscribe my channel Learning with Juhi Goel, and at the end you can see the playlist link, and I have provided in the description box also, and you can, if you have any doubt, you can write it in the comment section. So till then, take